students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 14, chemical effect of electric current, session number 2. In last sessions, children, we have discussed about how liquid reacts with the electric current and how the bulb is glowing. We have discussed about electric current. We have discussed about LED bulbs, how it is used as a tester. Right? Now we will move further with other experiments, children, because in this chapter with experiments only we are going to learn about different parts of the chapter. First, second is activity number 2. Now here in this activity we are going to see how magnetic needle, the needle which is there in magnetic compass, gets deflected due to electric current. So let's start with our activity. Take the tray from inside the discarded matchbox. Means आपको एक matchbox लेना है और उसकी tray को हमें use करना है. Wrap an electric wire few times around the tray. हमें उसके अंदर magnetic compass रख के उसे wire से हमें wrap करना है. Place a small compass needle inside it as shown in the figure. So here we are using magnetic compass. Right? Now connect one free end of the wire to the terminal of the battery. एक free end को हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना है. Repeat the activity with tap water, vegetable oil and milk. अब हमें क्या करना है? जो हमने प्लास्टिक कैप ली है उसके अंदर फर्स्ट हमें टेप वाटर डालना है. तो जब हम टेप वाटर डालेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी. व्हाट इज द रीजन चिल्ड्रन? बिकॉज टेप वाटर कंसिस्ट सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटू इट. राइट? सेकंड लिक्विड व्हिच वी हैव टू टेक इज वेजिटेबल ऑयल. अब वेजिटेबल जो ऑयल है उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता है बिकॉज देयर आर none of the acid, base or salts present into the vegetable oil. Next is milk. Milk is also not having salts, so the needle cannot get deflate. Now whenever the circuit gets complete, whenever any of the liquid which reacts with the electric current and completes the circuit, that time the magnetic compass needle will deflate. So here the conclusion is, when the electric current flows, the needle of magnetic compass gets deflected. जब जब करंट उसके अंदर से फ्लो होके सर्किट को कंप्लीट करता है तभी क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल जो है मैग्नेटिक कंपास की वो डिफ्लेक्ट होती है. नाउ लेट्स सी अबाउट थर्ड एक्टिविटी. टेक अबाउट 2 स्पूनफुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. अब तक हमने टैप वाटर यूज किया था. राइट? तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता था. क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेचुरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते थे. सो यू हैव टू टेक अ डिस्टिल्ड वाटर व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ ए बॉटल. कोई भी बॉटल की जो रबर या प्लास्टिक कैप होती है उसके अंदर हमें डिस्टिल्ड वाटर लेना है. राइट? Use the tester to test whether distilled water conducts electricity or not. अब ये जो distilled water है उसके अंदर हमें टेस्टर ज्वाइन करना है, बैटरी ज्वाइन करनी है और बल्ब भी ज्वाइन करना है. So what will happen when you put the 2 terminals of the circuit of the tester into distilled water? The bulb will not glow. Why, children? Because distilled water doesn't contain any type of salts. It is the purest form of water. Now, if you want to check the difference, what we can do? We can add a pinch of salt. Now we are adding pinch of common salt into water. Then what will be the reaction? The current will pass and the bulb will glow, because when the salt is added in distilled water, right, it can pass the current. So conclusion, distilled water is free of salt and is poor conductor. डिस्टिल वाटर जो होता है उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा नहीं होती है,
That is why it is poor conductor. We should never handle electrical appliances with wet hands. So this is the reason, children, whenever you wash the hand, you should dry your hands and then only you should touch any of the electrical appliances. Because tap water contains salt and it can give or it can harm and give us electric shock. Most liquid that conduct electricity are solution of acid, base and salt. अब जो भी solution के अंदर, जो भी liquid के अंदर acid, base या salt पाए जाते हैं, वो solution electricity के good conductors होते हैं. जैसे कि हमने distilled water के बारे में discuss किया, distilled water के अंदर salt नहीं होते हैं. That is why it is poor conductor. Same with sugar solution. Sugar solution में भी salt नहीं होता है, acid नहीं होता है, base नहीं होता है. So that will also not pass the electric current. So it is a poor conductor of electricity. I hope, children, you understood about today's experiment, right? So we have seen about magnetic compass, and one experiment we have discussed about distilled water. In next session, we will continue with the further parts of the chapter. Thank you and have a nice day, children.